Hello, my dear students. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 7 science, chapter number 6, physical and chemical changes. So let's get started. Children, see the warm up first. Change is the law of nature. आप हर रोज अपने दिन में बहुत सारे changes देखते होंगे. जैसे कि सबसे बड़ा change तो आप यही देखते हो कि a day changes into a night and again a night changes into a day. Change is the law of nature. In our daily life, we observe many changes around us. These changes can be observed by us at home, school, playground, parks, and other places. For example, ice melts on heating, water boils on heating, iron rusts in moist air, common salt dissolves in water, vegetable and pulses change on cooking, milk changes into curd, ripening of fruits, burning of wood, matchstick, change in weather, etc. are also example of changes. तो ripening of fruits, आप क्या देखते हो कि पहले क्या होता है? अगर आपने देखा हो, हम कोई पेड़ लगाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उसमें सीड डालते हैं ना ग्राउंड में, फिर उससे एक प्लांट आता है, प्लांट बड़ा होता है और होते होते इतना बड़ा ट्री बन जाता है. So this is the change which occurs in it. Burning of wood, wood होती है, wood को आप burn कर देते हो, it turns into ashes, it gives out carbon dioxide. This again is a type of a change. Rusted iron, iron को अगर आप expose करते हो air और moistures को, तो iron develops a coating of reddish brown color which is called rust over it. Make a list of 10 changes you have noticed around you. तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको ऐसे changes को note down करना है अपनी notebook में and you have to make it sure that you get it checked by your teacher. Now children, let's study about the physical changes. We know properties such as shape, size, color and state of a substance are called the physical properties. और इन properties में अगर कोई change आता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रबर बैंड लो और उसे स्ट्रेच कर दो तो क्या होगा? आपने उसकी शेप को और उसके साइज को चेंज कर दिया, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस से अपनी शेप और साइज जो है वो रीगेन कर लेता है. आप स्पॉन्ज लेते हो, स्पॉन्ज को आप स्क्वीज कर दो, उसकी शेप और साइज चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे इट रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज. ऐसे ही आप वाटर लो, वाटर को आप आइस ट्रे में डालो और उसे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने रख दो, तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर बाद वाटर टर्न्स इनटू आइस, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया. वाटर लिक्विड था, लेकिन आइस क्या है? आइस इज सॉलिड फॉर्म. अब आप उस आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या देखोगे कि आइस अगेन चेंज बैक्स टू वाटर. तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे स्टेट का चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ एंड लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज हुआ, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए ऐसे चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. चिल्ड्रन, सी द फर्स्ट एक्टिविटी. टू शो दैट कटिंग पेपर इज अ फिजिकल चेंज. अगर आप एक पेपर लेते हो और उसको आप मल्टीपल पीसेस में काट देते हो तो ये चेंज कैसा है? ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उन पीसेस को ज्वाइन करके हम पेपर बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला पेपर नहीं बनेगा, बट लेकिन पेपर तो बनेगा. उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे ओरिजिनल पेपर की थी, इसलिए उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई हीट इवॉल्व नहीं हुई, कोई हीट अब्सॉर्ब नहीं हुई, इसीलिए ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज. लेट अस टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. Cut one square pieces further into 4 square pieces. We arrange all these pieces on table so that the pieces acquire the shape of original piece of paper. Now we cannot join the cut pieces of paper to make the original sheet of paper. But each piece of paper is still paper. उसने अपनी सारी qualities, जो भी paper की qualities है, वो सब retain की हुई हैं. वो सारी properties उसके अंदर retained है. That is why इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. So during cutting of square sheet of paper into pieces of paper, only size and shape of the paper changed. और इसमें कोई नया substance नहीं बना है. The cutting of paper or tearing of a paper is a physical change. In this activity, we have seen during a physical change, no new substance is formed.
only physical properties of the substance changes. एक और एक्टिविटी देखते हैं. To show that glowing of electric bulb is a physical change. We switch on electric current in an electric bulb. The filament in the bulb becomes white or yellow hot and hence it glows. Bulb हमें क्या देता है? लाइट दे रहा है और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी दे रहा है. लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे, अगेन द बल्ब विल स्विच ऑफ. बल्ब जो है वो लाइट देना और हीट एनर्जी देना बंद कर देगा. और अगर हम स्विच ऑन करते हैं वापस से, it gives the light. Now switch off the current, the filament of the bulb gets cooled and does not glow. The glowing of electric bulb is a physical change as no new substance is formed. इस काम में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है. In this activity we see that during a physical change there is a change of color and some heat is evolved. तो आपने क्या देखा कि बल्ब जो व्हाइट कलर का था वो येलो लाइट से बर्न करना शुरू करता है, बट स्विच ऑफ करने पे वापस से व्हाइट कलर का हो जाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या शो किया कि फिजिकल चेंज में कलर का भी चेंज होता है. Examples of physical change, children: stretching of rubber band, grinding of a substance, melting of wax. Yes, melting of wax is again a physical change, क्योंकि जब आपने उसको हीट सप्लाई की तो वैक्स मेल्ट कर गई और अगर आपने उसको ठंडा कर दिया तो वापस से वो सॉलिडिफाई हो जाती है. Formation of clouds, expansion or contraction of substance on heating and cooling, magnetizing of an iron piece, hammering of metals to form thin sheets like hammering aluminium metal to form aluminium foil, stretching metals to form wires like hammering copper metal to obtain copper wire. तो यहाँ पर हमने साइज शेप को चेंज कर दिया, लेकिन मेटल वायर जो कॉपर वायर है उसके अंदर प्रॉपर्टीज तो सारी कॉपर की ही है, सो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसीलिए ये सारे चेंजेस फिजिकल चेंज है. तो चिल्ड्रन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. सबसे पहली बात, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, कलर, यही सब चेंज होते हैं. इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. अ फिजिकल चेंज कैन बी ईदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. जैसे कि आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया तो शुगर गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, लेकिन अगर मुझे शुगर को वापस से ऑब्टेन करना है तो मैं वाटर को हीट कर दूंगी, सो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. अगेन आई कैन गेट बैक माय कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मैंने वो सब्सटेंस बनाया था. Dissolving sugar in water is a reversible change as we can separate out sugar from sugar solution by evaporation. The tearing of paper pieces is an irreversible change because small paper pieces cannot form a single big piece of paper again. No or very small amount of energy is absorbed or evolved during a physical change. Now children, let's study about the chemical change. अब chemical changes वो changes होते हैं जिसके अंदर chemical properties of a substance is changed. Either heat is evolved or absorbed and a new substance is formed during the chemical change. In a chemical change, the original substance give one or more new substances that entirely have different composition and properties compared to those of original substance. और जैसे हमने अभी बात करी कि chemical changes के अंदर new substances बनते हैं जिनकी properties और composition different होता है from the one from they are formed. Let us perform some activities to understand the characteristics of chemical change. So children, let's have a look on the activity. To show that in a chemical change, the composition and chemical properties of the substance get changed and one or more substances are formed. तो आप क्या करोगे? आप 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाओगे, कॉपर सल्फेट डालोगे और उसके अंदर हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल दोगे ग्लास बीकर में और उसमें few drops of sulfuric acid डालोगे. We get a blue colored acidulated copper sulfate solution. Copper sulfate, as the name indicates, blue vitriol. Blue vitriol is blue in color. इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं. We take a small sample of acidulated copper sulfate solution in a test tube and drop a brightly polished iron nail carefully into it. अब आप क्या करो?
आप इस बीकर के वाटर को आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसमें एक बिल्कुल साफ आयरन नेल लेके उसमें डाल दो। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सोल्यूशन में आयरन ने CuSO4 के साथ रिएक्ट किया, CuSO4 इज कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया and it resulted in the formation of iron sulfate, ferrous sulfate में change हो गया and copper is displaced और FeSO4 का कलर होता है green, that is why it is called as Greenwich rod. Cover the test tube with paper and leave it undisturbed for half an hour or so. What you observe is, we will observe the following changes. The blue color of copper sulfate solution changes to light green color. Brown deposit is formed on brightly polished iron nail. These changes are due to chemical reaction between acidulated copper sulfate solution and iron nail, which produce two new substances. पहला तो copper displace हुआ और secondly iron sulfate जो कि green color का होता है वो solution में obtain हुआ. The iron sulfate solution is green in color, whereas the brown deposit on iron nail are of copper. This change can be written in the form of an equation. CuSO4, copper sulfate is CuSO4 plus Fe will give you FeSO4 plus Cu. तो अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. अगर आप इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी CuSO4 plus Fe will give you FeSO4 plus Cu. तो ये FeSO4 जो है यही ग्रीन कलर का है और जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट है वो कॉपर का डिपॉजिट है. In this activity we have seen the following changes. Composition of the substance taking part completely changes. New substances are formed. Change in color takes place and change is irreversible. अब हम इसको reverse नहीं कर सकते. Now see another activity children. To show that burning of magnesium metal is a chemical change. तो हम क्या करेंगे? हम एक thin strip of magnesium लेंगे जिसको हम बोलेंगे magnesium ribbon. तो magnesium ribbon लेंगे हम around 10 centimeter long. उसको अच्छे से clean कर लेंगे ताकि उसके surface पे कोई dust particle ना हो. And we get a shiny metal. अब हम उसे hold करेंगे tong से. Tong means चिमटे से उसको पकड़ेंगे और उसे heat करेंगे. तो जब हम उसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है विद अ dazzling white flame. ब्राइट कलर की व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न करता है टू फॉर्म व्हाइट पाउडरी एश. इस एश को हम कलेक्ट कर लेंगे. Hold the burning magnesium ribbon over a watch glass so that white powdery ash is collected into it. White powdery ash look different from the magnesium ribbon. White powdery ash cannot be changed back to magnesium ribbon. So this change is irreversible. अब ऐसा क्या हुआ मैग्नीशियम के साथ जो वो पाउडरी एश में चेंज हो गया? तो चिल्ड्रन यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड इट रिएक्टेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg plus O2 will give you MgO. तो जो व्हाइट एश हमें मिली थी वो इस MgO की एश थी एंड दिस इज इरिवर्सिबल. अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते. सो मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. हेंस इट इज अ केमिकल चेंज. ये चेंज रिवर्सिबल भी नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल. न्यू सब्सटेंस बना, स्टेट बिल्कुल चेंज है कि ये कैसा था, ये सॉलिड था और ये कैसा है, ये पाउडर फॉर्म में है. In this activity we conclude the following. A new substance is formed. Change proceeds with the evolution of heat and light. Change is irreversible. We take the powdery ash in a beaker containing about 20 ml of water. अब आप क्या करोगे? अब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो अब हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करेंगे कि इसका नेचर कैसा है. तो सबसे पहले आप लिटमस पेपर ले लो. ब्लू लिटमस को इसमें डिप करो तो ब्लू लिटमस विल नॉट चेंज टू रेड क्योंकि ये एसिड नहीं है. लेकिन अगर आप इसमें रेड लिटमस ब्लू को डिप करोगे
तो इट विल चेंज इनटू ब्लू। दैट मीन्स हमें जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से साथ रिएक्ट कराया तो हमें एक बेस मिलती है विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। We take a strip of blue litmus paper and put a few drops of magnesium oxide solution on it. The litmus paper does not turn red, showing that magnesium oxide solution is not acidic. We take the strip of red litmus paper and put a few drops of magnesium oxide solution on it. The red litmus paper turns blue, जिससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है। तो जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो उससे हमें क्या मिली, उससे हमें मिली एक बेस जो कि अगेन रेड लिटमस को ब्लू में ही चेंज करेगी। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, like MgO plus H2O will give you MgOH whole twice. Children, see some examples of chemical change. Explosion of firecracker is a chemical change. अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है और साथ में ऐश बनती है। इस ऐश को वापस से आप फायर क्रैकर में चेंज नहीं कर सकते। हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करती हैं। दैट इज व्हाई वी आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर क्रैकर्स। चेंज इन द कलर ऑफ कट फ्रूट, अगर आपने कोई फ्रूट काट के रख दिया है, एप्पल ही लिया है, तो एप्पल थोड़ी देर में रेड हो जाता है। If we cut an apple into slice and keep it in open for some time, the slice of apple acquires a brown color due to formation of a new substance by action of oxygen. तो ये फ्रूट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। Similarly, the cut surface of brinjal turns black on keeping in air for some time due to chemical change. Another examples include formation of curd from milk. अब आप देखो कि मिल्क कैसा होता है, मिल्क स्वीट इन टेस्ट होता है, उसमें लैक्टोस होता है, लेकिन जब वो कर्ड में चेंज हो जाता है उसका टेस्ट चेंज हो गया, वो सार हो जाता है और उसके अंदर लैक्टोस की जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसको हम वापस से लैक्टोस में चेंज नहीं कर सकते। Hence, it is a chemical change. Spoilage of food, digestion of food, burning of fuel, burning of dry leaves, burning of candle wax, burning of incense stick and rusting of iron. Children, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वैक्स को मेल्ट करते हैं, कैंडल लेते हैं तो उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट करती है, तो वो कैसा चेंज है? वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम कैंडल को बर्न करते हैं उसकी वैक्स मेल्ट करती है, ये तो फिजिकल चेंज है, लेकिन उसकी जो विक होती है वो बर्न करती है, वो गैस, उसमें से गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दैट इज व्हाई ये चेंज जो है वो केमिकल चेंज है। इसीलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल विक इज अ केमिकल चेंज। तो दोनों ही टाइप के चेंजेस होते हैं हमारी कैंडल वैक्स में। वैक्स मेल्ट करती है, वो फिजिकल चेंज, और जब उसकी विक बर्न करती है तो इट इज अ केमिकल चेंज। Now children, see the characteristics of chemical change. During a chemical change, one or more new substances are formed. We have already discussed this. Chemical changes are permanent. हम इसको reverse नहीं कर सकते. Thus, a chemical change cannot be reversed by simple physical methods. During a chemical change, a relative larger amount of heat, light or other radiations may be given out or absorbed. For example, burning of fuel produces large amount of heat. Energy in the form of light is absorbed by the green plants from sunlight. This energy is used to make their food. During chemical change, both physical and chemical properties of a substance are changed. Now, chemical formula. Children, let's discuss about the chemical formula. केमिकल फॉर्मूला और मोर करेक्टली फॉर्मूले। तो आप क्या करते हो, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो हम किसी भी सब्सटेंस का पूरा नाम नहीं लिखते, हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने अभी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था MgO। तो इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख के सिंपल इसके सिंबल्स को लिखते हैं एंड दिस इज नोन एज इट्स फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो कॉपर सल्फेट को हम लिखेंगे Cu, एज कॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय Cu एंड सल्फेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम SO4 से। सो इट इज इजी एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट द
फॉर्मूला इन द सिंबल्स फॉर्म. हम कभी भी उनको वर्ड की फॉर्म में नहीं लिखते, हमेशा उनको सिंबल्स में लिखते हैं. केमिकल फॉर्मूला आर designations of molecules and compounds in shorthand notation similar to that used in algebra. The number of atom of each element in a chemical formula is designated by a small number behind each element symbol. If there is no number, it is assumed there is only one of that element. जैसे कि आप यहाँ पे Cu के साथ देखो, Cu के साथ कोई नंबर नहीं है, तो that means इसके अंदर सिर्फ एक Cu का एटम है. इसमें सिंगल S है, तो that means एक सल्फर का एटम है और 4 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के. A larger number in front of the compound designates how many units there are of that compound. Now chemical reaction. अब chemical reaction जो है वो represent करता है कि हमारे कौन कौन से substances ने react किया था और उनसे हमें क्या product मिला. तो दो substances जो react करते हैं उनको हम बोलते हैं reactant, और जो हमें मिलता है उनसे, उनके reaction से जो हमें substance मिलता है, that is called as its product. A chemical reaction is a process of making or breaking of the chemical bonds of the reacting substances to form a new substance. Chemical reactions are represented by chemical equations. As you have just noted, the substance taking part in the reaction को हम क्या बोलते हैं? Reactant. और जो हमें नया substance मिलता है उसे हम बोलते हैं product. जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और दूसरी चीज हमें मिल जाएगी NaCl. सो हमें मिल जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. Children, see the rusting of iron. Iron objects like iron nail, iron pipes, iron grills, iron railing etc. when kept in moist air. Moist air का मतलब होता है जिस air में moisture present हो, water present हो. For a few days get covered with a brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. तो जब iron के कोई भी part आपका expose out होता है, air के contact में आता है which has moisture, तो वो उसके साथ react करता है and it results in the formation of brown powdery substance called rust. Two necessary conditions for rusting of iron are, सबसे पहले presence of air, मतलब oxygen present होनी चाहिए. दूसरा, air के अंदर moisture present होना चाहिए. During the rusting of iron, iron metal combines with oxygen in the presence of water to form a mixture of iron oxide and iron hydroxide. यही दोनों चीजें मिलके रस्ट बनाती हैं. And the process can be represented as iron plus oxygen plus water will give you iron oxide plus iron hydroxide. So this is rust. Preventing of rust. Prevention कैसे कर सकते हैं भाई? रस्ट को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या करो कि अपने सब्सटेंस को, अपने आयरन के ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में मत आने. ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. कोटिंग द आयरन विद ऑयल एंड ग्रीस. आप उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दोगे. ऑयल और ग्रीस क्या करेंगे? दे विल नॉट अलाउ द आयरन ऑब्जेक्ट टू कम इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर. तो वो उसको उसके कंटैक्ट में ही नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पीस है, आयरन ऑब्जेक्ट है, वो बच जाएगा फ्रॉम रस्टिंग. Various machine parts and tools made of iron are coated with a thin layer of oil or grease when not in use. It prevents them to come in contact with air and moisture and hence rusting is prevented. Coating with paint. आप अपने iron furniture, bicycles या bodies of car, truck, ships को क्या करो? आप पेंट कर दो. तो पेंट भी क्या करेगा? Paint will not allow the moist air to come in contact with the iron object, जिसकी वजह से rusting can be prevented. Iron furnitures, bodies of cars, trucks and ships, bridges, staircases etc. are given a coat of paint from time to time to protect them from rusting. When a coat of paint is applied to surface of iron object, it does not allow oxygen and moisture to come in contact with iron and hence no rusting takes place. और तीसरी चीज है आप गैल्वनाइजेशन कर दो. गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर.
This process is called as galvanization. तो galvanization भी वही काम करता है. It does not allow the iron object to come in contact of air having moisture, जिसकी वजह से rusting can be easily prevented. The process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object is called galvanization. It is done by dipping iron sheet in molten zinc and then allowing them to cool to get galvanized iron sheet. A thin layer of zinc metal formed on the surface of object protect it from rusting because zinc metal remains unaffected by air and moisture. The iron pipes used in our homes to carry water are also galvanized to prevent rusting. Iron sheets are used to making buckets, drums, dustbins और roof sheets. ये भी galvanized होती हैं with help of zinc. दूसरा, हम इसकी क्रोम प्लेटिंग कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें. तो हम क्या कर सकते हैं, हम आयरन के ऊपर एनी डिजायर्ड मेटल जो हमें पसंद हो, जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, हम इजीली उसके ऊपर कोट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Articles like spoons, taps, sanitary fitting, bicycles, handlebars, car bumpers, etc. are given a coating of chromium metal by using electric current by a process called as electrolysis. This process of depositing chromium metal on iron object is called chrome plating. जब हम chromium की plating करते हैं तो हम उसे बोलते हैं chrome plating. This chrome plating protects the iron object from rusting because chromium remains unaffected by air and moisture. या फिर हम आयरन को चेंज कर देते हैं स्टेनलेस स्टील में. तो molten iron is mixed with a fixed amount of carbon, chromium and nickel. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आयरन का एक अलॉय बना देते हैं. On cooling it forms an alloy called stainless steel. और स्टेनलेस स्टील जैसे आपने देखा होगा आपके घर में चम्मच है या आपके घर में नाइफ है, वो सब किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, और वो रस्ट नहीं होते. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन का अलॉय बना दिया, उसको अलॉय बना दिया बाय मिक्सिंग कार्बन, क्रोमियम एंड निकल. Cooking utensils, knives, scissors and surgical instruments are made up of stainless steel. Now children, have a look on crystallization. Sea water contains salt dissolved in it, which makes it salty. We have learned in class 6 that salt can be obtained by evaporation of sea water. हम इससे तो अपना salt obtain कर सकते हैं, लेकिन जो salt आएगा वो it will have the impurities, क्योंकि उसमें से सिर्फ water ही तो evaporate हुआ है. अगर हमें salt water में से salt को separate करना है and that too in its pure form, तो हम help लेते हैं crystallization की. एक method है जिसे हम बोलेंगे crystallization. This technique of separation is not good because salt obtained in this matter is not pure and its crystals are small. Also, the shape of crystals cannot be seen clearly. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसको crystallization कर देते हैं. Crystallization हमेशा saturated solution से ही किया जाता है. Crystals are the purest solid form of a substance with definite geometric shape. तो जो हमें नए crystals मिलते हैं salt के, उनकी definite geometric shape होती है. Many substances like sugar, urea, copper sulfate, alum and table salt form crystals. Crystals of different substances have different shapes. Large crystals of pure substances can be obtained easily from their saturated solution by the process of crystallization. By obtaining crystals, we are able to purify certain substances. Let us obtain the crystals of copper sulfate in the following activity. तो आप क्या करोगे इस एक्टिविटी में, हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आप क्या करो, आप 100 ml ऑफ वाटर लेंगे बीकर में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे. हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द बीकर ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड विद बर्नसन बर्नर. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग वी ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर while stirring continuously. We keep continuously adding copper sulfate solution till no more powder can be obtained. तो अब क्या हुआ, हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट तब तक डालते रहेंगे जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए. दैट मीन्स हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया है, किसका, कॉपर सल्फेट का. दिस विल गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज.
और उसको हम रख देंगे ताकि उसके क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म हो सके। Characteristics of physical and chemical changes are given below. Physical change, the composition of substance does not change, लेकिन यहाँ पे composition जो है वो change हो जाएगा। ये ज्यादातर reversible होते हैं, ये irreversible होते हैं। No new substances formed, यहाँ पे नया substance बनता है। For example, वहाँ पे ice, water, steam, and यहाँ पे example है paper and ashes. Children, have a look on the new words. Corrosion. Eating away of metal due to rusting. Now what is rusting? Reddish brown flaky coating on the iron. Now what are symbols? A shorthand representation of elements. Product, the substance that take part in chemical reaction. Chemical formula, symbolic form of a chemical compound. Crystallization, process of separation of pure crystals of a substance. Children, see the summary of this chapter. Changes can broadly be classified into two types. एक होता है physical change और एक होता है chemical change. A change in which the physical properties of substance change is called a physical change. These changes are mostly reversible and temporary. No new substance is formed in a physical change. A change in which chemical properties of substance change and result in the formation of a new substance is called chemical change. Such a change is irreversible and permanent. Rusting is an example of chemical change. Presence of both air and water is essential for rusting to take place. Rusting can be prevented by cutting the contact of either air or water or both with iron. जब हम आयरन को एयर और वाटर के कंटैक्ट में आने ही नहीं देंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। Crystallization is an example of physical change. Process of crystallization is used for purification of some substances. Children, see the exercise part. पहला क्वेश्चन देखिए। First question says, choose and tick the correct option. Dissolving sugar is a reversible change. Carbon dioxide turns lime water, it's milky. Rust क्या होती है? Rust होती है आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही ले सकते हैं आप, इसमें आयरन हाइड्रोक्साइड करेंगे। In galvanization, iron objects are coated with zinc metal. Write T for true and F for false. Burning of paper is a physical change. No, it is a chemical change. Rusting of iron can be prevented by paint. Yes, it is true. Iron objects can rust if exposed only to water and not air. ये दोनों ही चाहिए होते हैं. Stretching of rubber band is a physical change. Of course, it is a physical change. See the C part. Fill in the blanks. Changes that lead to the formation of new substances are called chemical changes. Melting of candle wax is a physical change, but its burning is a chemical change. Large crystals of pure substances are obtained by crystallization. Crystallization से आप इसको obtain कर सकते हो. The brown layer deposit on iron nail dipped in copper sulfate solution is due to formation of copper. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.